Okay, guys. So today we are going to learn about this one clause. This one of clause. So what is clause and what are type of clause? So we will discuss today on this. See, a clause has its own subject and its own predicate. Okay. So now this is to think subject में क्या है और predicate क्या है. Like a sentence के भी use the subject में the predicate. सब्जेक्ट में एक प्रेडिकेट में तो आसान के इसमें जो सेंटेंस क्लॉज में बड़ा के अलावा वो जो नेक्स्ट लेक्चर में को या अपने एंड में का मौके वीडियो मैं कोशिश करूंगा क्लास क्लॉज ऑफ द क्लॉज है आगे a clause has its own subject and predicate sentence number 1 suppose he did not attend party because he was ill. He did not attend the party because he was ill. Now see, this is a clause, and another clause is this because he was ill. And here you have clause number 1, clause number 2. Yes, यहाँ पर clause करें अकेला नहीं तो clause करें भी अकेला नहीं तो हमेशा वो clause का चीज़ आप या ट्रे इकट्ठे रखो तो एक clause दियो और एक sentence दियो एक clause दियो और एक स्टार्टिंग की sentence दियो आप यार डिस्कस करना sentence दियो और he ये को because के he connects he अलग part होती है he अलग part होती है आगे का clause has its own subject and predicate सारे subject आए he subject आए and in clause sentence बनवाए लेकिन भी आए लेकिन भी आए अच्छा इनका को he predicate है attend party में he predicate है predicate है ऐसा जो he चाहे ये सही बाकी बहुत ही चाहे है यानी कि सब्जेक्ट ना के लिए सब्जेक्ट ना के लिए प्रेडिकेट ना के लिए प्रेडिकेट है ना के लिए कोई जान लिया क्लॉज हमारा सेंटेंस ये हमारा सेंटेंस है तो सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस को नहीं तो सिंपल सेंटेंस तो क्लॉज नहीं तो सिंपल सेंटेंस और ये तेरा सेंटेंस ना क्लॉज ना तो मैंने कहा सिंपल सेंटेंस नहीं तो क्लॉज किया सेंटेंस कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स वो सारा सारा करके लिखे बाकी क्या होता है जब ये सेंटेंस चाहे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो सेंटेंस टाइप बता दो और डिस्कस करा दो सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में फर्क पड़ता है समझ देखिए वो समझ नेक्स्ट I had not lived there but they left me. Okay, they left me. Okay, ऐसा सब्जेक्ट है तो मैं के पास सब्जेक्ट है मैं क्लास के सेंटेंस है और सब्जेक्ट है ये क्लास के भी और जो सब्जेक्ट है और ऐसा कैसे ही जो चाहे मैं बोलते हो चाहे जो प्रेडिकेट है जो एक प्रेडिकेट है जो प्रेडिकेट यानी इनके सब्जेक्ट क्या है इन क्लास के सेंटेंस है इन क्लास के भी सब्जेक्ट है इन क्लास के सब्जेक्ट मौजूद है एंड इन क्लास के प्रेडिकेट मौजूद है ये प्रेडिकेट के अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज हमारा क्लास ये टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या है हमारे कई टाइप ऑफ क्लॉजेस है मेजर नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज that clause type 9 that clause जो type 9 पर noun clause change करने का चाहता हूं that clause actually noun है जो क्या रहेगा noun clause रहेगा that why this that clause or noun clause is the same thing they are not two but they are single type हम लोग तो चार टाइप है ही जो that clause type 9 तो that clause by noun clause because that हमेशा छाड़ दिया noun clause suppose you मुझे लिख दो sentence लिखा है मुझे समझिए that he is her brother that he is her brother he जो sentence है समझो ये चाहे noun clause समझो noun clause है
a noun clause है a understood as he चाहे noun clause है sentence that question understand खाना मतलब noun clause क्या क्वेश्चन a noun clause is a clause that functions as a noun clause अच्छा noun clause किसे कहते हैं या तो नाम सब्जेक्ट में लगाओ Jesus of that so inside this sentence जो आपको sentence में ये clause as a subject to work करेगा as a subject to work करके जो कोई verb लेगा वो ये जो complement है ही जे को इसलिए जो को इस sentence को clause को inside subject रखे जो वो है verb and जो ही complement understand so noun clause functions is always a subject object or a complement understand यानी ये जो बात है that देखो ये that he is her brother ये चाहे subject आगे जो ये ना कुछ भी देखा बच्चों तो यो as a clause यो जो clause है as a subject no ये subject लेती ये subject आगे और verb ठीक अच्छा next sentence था what he says is everything wrong yeah is complete wrong is it complete ये जेको चढ़ता सजो बड़ा बिल्कुल गलत ना ये जो ये सजो वर्ब ये सजो वर्ब ही जे को सजो ये सजो noun clause चाहे noun clause कब चालू कर देंगे subject कब कर दो subject कब कर दो तो ये जो इसका complete wrong ये जे का जो वर्ब इस जो पार्ट sentence चाहे complement understand यानी ये जो predicated है subject जो किया है आगे जाके से a clause has its own subject and its predicate he से subject है और जब ऊपर इसलिए बोले चाहे it's predicate next is part है adjective clause ये भी second part second type of clause adjective clause a clause that functions as an adjective in the sentence is said to be adjective clause again adjective clause और जैसे जो adjective जो करो अच्छा clause जो करो adjective clause हुआ कने करे तो phrase सब clause पड़ेगी adjective phrase पड़ेगी तो कने करे group of words phrase जो यूज करना है तो हमारा मतलब group of words having verb phrase चाहो incomplete ना माने और ही चाहो तो full माना सकते a clause has its own complete meaning सेंटेंस दे दो अब देखो सेंटेंस आए वो क्लास लो वो क्लास चालू करे एडजेक्टिव वो क्लास एडजेक्टिव करो वो क्लास चालू he is a man who stole now this part is called adjective clause this part is called adjective clause who चालू करे man who modifies man and जब को मॉडिफाई करना नाउन के ओके होगा वो एडजेक्टिव देखो नाउन को मॉडिफाई करना वो एडजेक्टिव होगा देखा वो एडजेक्टिव वन लिखा है चाहे एडजेक्टिव क्लॉज अच्छा है ना एडजेक्टिव क्लॉज देखने के लिए नाम ना होगा रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज में क्लॉज करना तो नाउन का हो
वधीक वारो करे पर नाउन जो कम नथो करे ई एडजेक्टिव जो कम करे नाउन जो कम नथो करे हुते चाहे और नाउन जो कम करे नाउन जो करे she was he come one class she is a he is a man you pro class but who stole your wife he was class he class negative person subject predicate है negative person subject predicate अगले next she was her mother subject है her mother complement है her mother complement है ले close करे sentence but who and who gave you a pen he is a part है ये one class है ये class है का subject क्या है का subject क्या है का predicate है predicate है you have your adjective clause है show who अलग लफ्ज नहीं who पर माना नथुरे करे पर ये माना ऐसा बोल के मतलब मदद जी या ऐसा लफ्ज who का लेकर that gave you a pen हर सवाल दे बता दो तो जेने इते that सा adjective clause है तो इते that सा noun clause होते सोचने वाला सवाल समझे परफेक्ट था इते that सा noun clause है इते that सा adjective clause है ये फर्क है मतलब इते adjective किया ये फर्क है इते noun clause किया इते noun इते adjective फर्क के पे आज देख सके फर्क में हमने वादा कर चुका है जेने that subject है लोग करें that subject है लोग करें वो चाहिए noun clause है पर जेने that adjective में लोग करें adjective लोग क्या करें कि noun के साथ करें noun के काम के साथ करें इतने कई काम में that साथ हमें करें that के काम में हो न पे करें और इतने चाल करें ऐसा मतलब के जेने आहे साथ कोई मदर noun में तो हिसाब करें जेको भी लफ्ज noun के साथ वो चलता adjective यदि कोई सलियो जो लफ्ज that के that adjective थ्योरी यानी कि हम को सलियो कोई पार्ट चाहिए adjective next adverb clause now what is adverb clause adverb clause a clause that functions as an adverb in the sentence is called adverb clause मतलब चलो करो as an adverb because it was found where you had forgotten ये शब्द लगी जा सकते सारे शब्द लगी थी देखो ऐसा है कहानी कितना सोना it was found पीछे आ जाओ क्लास तो where का बॉडी है समझो where बॉडी क्या कनेक्ट करेंगे connect करो कनेक्ट क्लॉजेस के कनेक्ट कर लो we need a connector to connect the two clauses ये कनेक्ट करो the where is used as a connector जो where interrogative pronoun के interrogative adverb किया है पर relative adverb किया है ठीक है as a relative adverb भैया as a relative adverb भैया हां इतना जिक्र ही चाहना है कि adverb के अलावा यो जो वेयर काते काते नाउन क्लास टाइप यो ही वेयर काते काते एडवर्ब क्लास टाइप तो काते काते नाउन क्लास टाइप तो वो समझ आती जेने वेयर के बगैर नाउन क्या आया वेयर बगैर नाउन क्या आया एडवर्ब क्लास टाइप जे नाउन का लगाएगा तो वो वेयर नाउन क्लास और ऐसा आगे के सेंटेंस में आगे लेके चलो सपोज देख सकते हैं my brother will meet you as soon as he reaches पर है ना चलेगा ये करो my brother will meet you as soon as possible ये जुमला ही गलत है गलत जुमला नहीं पर सेंटेंस सिंपल थे तो है ना सेंटेंस में जो पता होगा वो पार्ट इसका और कोई पार्ट थे तो सिंपल एक सेंटेंस है आसान का सेंटेंस को क्लास कमेंट करें एक समझो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना वो as soon as